concept of inversion of temperature. Inversion of temperature. And this topic, inversion of temperature, is very important topic for your mains. Despite some questions earlier also asked by the state PCS and UPSC on the distribution of temperature, but out of all these topic, the most important is the inversion of temperature, especially for the mains. But to understand this topic, earlier concepts is again very important. So, and when I will discuss the inversion of temperature, again in this topic I will discuss introduction, what do you mean by inversion, then I will discuss the conditions of inversion. On the basis of that conditions, I will discuss the types of inversion. Types of inversion of temperature. And then the significance of inversion. Significance of inversion of temperature. When we talk about the significance, here we have to understand actually the positive as well as negative significance. Okay. So, yes, of course. So this is the topic I will cover here. So now earlier what I have said, when I'm talking about the temperature, what is the temperature? Basically the degree of hotness and coldness of an object. Or matter. Then how we measure the temperature? As you know, the device is known as thermometer. So thermometer is the device and as you know, the unit is degree centigrade or the Fahrenheit or Rankine or the Ronke, but here we use either the degree Celsius or centigrade or the Fahrenheit, okay, in the climatology. So now let's understand this topic through this presentation now. So
Now, as you know, the normal body temperature of the human being, when we started measuring, it is almost around 37 degrees centigrade. Because the human are mammals, and the mammals are the warm-blooded animals. And what do you mean by warm-blooded animals in biology? The animals having the uh, where there is a separation of the blood flow, where the pure and impure bloods separately flow in the tubes. So there is no mixing of blood. When you look at several organisms on this planet Earth having the mixing of the blood, won't related to the concept of climatology. मैं यहाँ climatology नहीं, मैं biological dimension बता रहा हूँ. तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, बिकॉज जो हार्ट होते हैं वहाँ उन एनिमल्स में या तो 2 चैम्बर्ड होते हैं या 3 चैम्बर्ड, बट ह्यूमन बींग में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स. तो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, प्योर और इम्प्योर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सेपरेटली फ्लो करते हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती, और इसलिए वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स. And our body temperature is always constant. We call it homeostasis. हम उसे homeostasis कहते हैं. Birds having also the 4 chambered heart, so birds are also the warm-blooded animal. So the body temperature are constant, and that's why in the winter and the summer, to avoid that temperature of the environment, we use certain mechanism or adapted certain mechanism. आप विंटर क्लॉथ पहन रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री और सराउंडिंग टेम्परेचर लो होगा, तो आपके बॉडी से हीट रेडिएट करेगा बाहर की तरफ, यू फील cooled, okay, and there is a chances of exposure of cold. That's why to maintain our body temperature we use the winter clothes. So nothing related in the climatology, ये तो just ऐसे दे दिया क्योंकि स्केल्स बने हुए थे. But what we have to understand first, the concept of temperature, what I have written here, the degree of hotness and the coolness is known as temperature. Now, what is important here, what I am going to discuss here, the temperature over the planet Earth and the temperature of atmosphere. In climatology, this concept is required. Okay, so once you look at, I had already discussed the heat budget, and during that discussion, what I had discussed, what are the factors which led to the heating of the atmosphere and the planet Earth. What I have said, there are different factors, controlling factor, which control the heating of the planet Earth and its atmosphere. And the prominent factor which control the temperature of the planet Earth and its atmosphere is the latitude. Latitude is the most important factor. Latitude, we also called it parallels, because latitudinal lines are parallel to each other. Okay, these are imaginary lines the geographer draws over the planet Earth for the simplicity of the study of the Earth's phenomena. So we called the latitude as a parallel. Okay. So what I have said, what I have written here, the temperature of a particular place depend primarily on the amount of insolation received. Because as I have discussed earlier, the only source, the sole source of the energy for the planet Earth is the solar insolation, incoming solar radiation. We called it insolation. So what amount of insolation received by the planet Earth, on that the temperature of that region depends. So primarily the temperature of any region depend on the amount of insolation received by the surface of the Earth. It's quite simple, as you know. Okay, now तो ये तो क्लियर हो गया कि जितनी लाइट आएगी रिसीव्ड होगी अर्थ सरफेस से, टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अब है कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन विच इज रिसीव्ड बाय द प्लैनेट अर्थ इज नॉट होमोजेनस. हेट्रोजेनस अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लैनेट अर्थ मीन्स लैटिट्यूडनल वेरिएशन देखते हो तुम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन में. मैंने पहले भी डिस्कस किया था.
मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ड्यूरिंग the earlier concept of the heat visit and the heating of atmosphere and the earth. What I have said that if this is the planet earth, if this is the planet earth, and if here there is a sun, and this is the equatorial line, 0 degree, and when you move towards the north and south, this is the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. And here what you observe the polar region, the North Pole and South Pole. So what we observe, the general trend is that when you move from the low latitude towards the high latitude, what we observe, what is the general trend we observe? Decrease in temperature. What we observe? Decrease in temperature. In the equatorial and the tropics region, the temperature is high round the year. But when you move towards the pole, the temperature decreases. The reason is why we observe this latitudinal variation. Because the amount of insolation received by these latitudes is not equal in amount. Why? Because the Earth radiant energy is vertical, as I have said, along the equators and the tropics, while the amount of radiation received by the higher latitudes, the temperate as well as the polar latitude, here the light reached in oblique directions. So what happened in between the planet Earth and the sun? There is a atmosphere having the gaseous compositions as well as particulate matter, aerosols and the water vapor. So some energy dissipates here, absorbed, scattered, okay, and some energy returned back, as you know. So here the energy dissipates, so the amount of insolation which is received in this region is high in comparison to this region. So why the differential heating of the Earth's surface latitudinally from the low to the high latitude? Due to differential what input of the radiant energy here. Here the amount of insolation is high in comparison to this region. This is one factor. So latitude, of course, is a most pronounced factor for the differential heating of the Earth's surface. Okay, I had already discussed. But what I have discussed, apart from the latitude, other factors also control the heating as well as the temperature of the planet Earth. Say altitude. With altitude, the temperature decrease. The distance from the sea, what I have said that along the sea, what you find, there is a diurnal variations of the winds. The land and sea breezes moderate the temperature. Along the sea coast or the coast of the oceans, we also find the influence of the oceanic current. Okay, when you look, observe the Atlantic Ocean. Observe the Atlantic Ocean, what we observe there along the Atlantic. Once you observe, this is the North America and here there is a South America. When you look at this is the Central America. So this is Atlantic.
northern Atlantic when you look at, because equator crosses through the South America. And when you look at this equatorial line, this is the North Atlantic Ocean. What we observe here in the North Atlantic, in the northern part of Atlantic here, ocean currents generates. This ocean current is known as North Equatorial Current. Because this current generates along the equator. So this is the equatorial current. Okay. And of course, in the southern hemisphere also this equatorial current is flowing from the direction of east towards west. Means from the African coast towards the American coast. Getting my point? Now, when you look at, because here there is Africa. Equator is crossing through the here. Now, when you look at this equatorial current, because this water current, oceanic current generates along the equator, these are warm in nature, warm oceanic current. These are. It bends when it strikes to this land part, it bends due to Coriolis effect. When it started moving along the eastern part of this North America, look at here, this is North America. When this current moves along this eastern part of the North America, this current is the warm current. Okay. There is a different name of this current, Gulf Streams it is known as, because it crosses the Mexican Gulf. So this is the Gulf Stream. Why it is Gulf Stream? Because it crosses the Mexican Gulf. ये मैक्सिको है यहाँ पे ये जो गल्फ है इसे मैक्सिकन गल्फ कहते हैं या गल्फ ऑफ मैक्सिको. ओके, एंड हियर देयर इज अ कैरेबियन आइलैंड. Now when you look at this Gulf Stream, when it moves again forward, this Gulf Stream is known as North Atlantic Drift. Why it is known as North Atlantic Drift? Because further I will tell you, इस करंट को, इस ओशनिक करंट को यहाँ पुश करते हैं. क्यों? वेस्टर्लीज विंड चलते हैं. एक विंड चलता है, परमानेंट विंड, मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, उसे वेस्टर्लीज कहते हैं. उसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है. तो ये क्या करती है, करंट को वेस्टर्लीज विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ ड्राइव करती है, पुश करती है. दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड ड्रिफ्ट. So now that same current, the North Equatorial Current, which further we called Gulf Stream, now it is known as North Atlantic Drift. Same current. Now North Atlantic Drift is again a warm current. Origin here is at equator. So this warm water in the ocean started moving from this to this, and when the warm current is moving along the eastern coast of this North America, what happened? The evaporation takes place. कहाँ ये warm current चल रही है? Ocean में evaporation takes place. Due to evaporation, condensation of cloud takes place, and the precipitation received by the eastern coast of North America. And the temperature and humidity increases along this coast. Then when this North Atlantic Drift reached the Greenland, here the Iceland, and when you look at above, there is a Europe's, and when you look at the European part, okay, so it reached at the coast of Arctic, and this warm current melt the ice, the polar ice. So what I would like to suggest you here,
not only the latitude control the temperature, but other factor also control the temperature. Here the ocean currents also responsible for the heating of the eastern coast of North America. Why? Because this is the warm current which is moving along this coast. But when you look at, interestingly, so this is the western part of Atlantic, try to understand, and eastern part of this continent. ओशियन का ये वेस्टर्न पार्ट है, कॉन्टिनेंट का ये ईस्टर्न पार्ट है, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें। इस अटलांटिक के ईस्टर्न साइड में कौन से कॉन्टिनेंट हैं? यूरोप एंड अफ्रीका। Getting my point? And now when you look at what happened, this current bends. Now here one current is originating in the polar region along the Iceland, Greenland, Norway. One current is originating and this current is moving towards equator. Let's use some another color. Here. So on the eastern coast, when you look at eastern margin of the Atlantic or the west side of Europe and Africa, what we observe, a current is moving from pole towards equator, slightly deeper in the ocean, and these are the cold current, because the origin is of this current is towards the pole, and the pole is cooler, receives less insolation. The higher latitude, when you look at, received less insolation. So the water here is cold. This cold water are the denser. This water started moving towards equator. When this water started moving towards this, and when it moves across this coast of Europe, western coast of Europe and western coast of Africa, it cools down this. There is no cloud condensation, क्योंकि evaporation होगा ही नहीं, ये current flow करेंगे तो वाटर ठंडा रहेगा तो evaporation कैसे होगा? evaporation नहीं होगा तो cloud condensation नहीं होगा, cloud condensation नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? precipitation नहीं होगा। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि there is a desiccation effect of this. That's why cold current are responsible for formation of deserts also, क्योंकि ये कोल्ड करंट ठंडे होते हैं तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। कॉन्टिन्यूसली कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है, मॉइस्चर लैंड का एब्जॉर्ब हो रहा है, लैंड ड्राई होगा, एरिड हो जाएगा, डेजर्ट फॉर्म करते। वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट्स देखोगे वो तुम्हें दिखाई देंगे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर। इन नॉर्थ अमेरिका कैलिफोर्नियन डेजर्ट इज हियर, मैक्सिकन डेजर्ट्स, Atacama Desert in South America is in the western coast. Sahara Desert in the western coast of Africa. When you look at the desert are on the western side of continent. Why? Because cold current are moving along that coast. And the cold current I am talking about. So what I am suggesting you people, despite latitude is a most important factor which control the distribution of insolation received by the surface, but apart from that, altitude, ocean current, distribution of land and sea are some other controlling factor of the temperature. Getting my point? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया एक कि कैसे ओशन करंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे इनके कारण आपको डिफरेंशियल हीटिंग दिखाई देगी, इसका इम्पैक्ट। दूसरा अभी मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी के बारे में देखोगे तो तुम अगर मैप देखते हो, एटलस देखते हो, ये देखो, आई हैव द ग्लोब ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। व्हेन यू लुक एट,
This is the equator. And when you look at the northern hemisphere, northern half of the planet Earth, what we observe here, the northern hemisphere having the sufficient and the larger amount of land mass. Look at this continent, North America, which is a huge continent having the broad land mass. When you look at the Eurasia, Europe and Asia combinedly having the huge land mass. Okay. Africa, the majority part of the Africa lies in the northern hemisphere. Okay, so when you look at the broader part of Africa lies in the northern hemisphere, the narrower part of Africa lies in the southern hemisphere. When you look at South America, tapering towards the south, South America, या narrow होता चला जा रहा है towards the south. So basically what you observe, the sea is wider in the southern hemisphere and the land is wider and occupies more area in the northern hemisphere. So this distribution of land and sea is also responsible for the differential temperature distribution over this planet Earth. The question is why? Earlier I had discussed that lands are made up of the rocks. Means lands are basically solid structure. The continental part are the solid structure. And when you look at the water bodies, it is liquid medium. There is a differential heating ability. Why? Because specific heat changes. Land heated, okay, quickly and re-radiate back energy. But the water bodies, when receives insolation, it slowly and gradually heated. Try to understand. Why? Because insolation deeper penetrate into the water. Water is liquid. तो अगर तुम देखोगे, अगर यहाँ पर ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंटल पार्ट, ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज पैसिफिक ओशन. नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पैसिफिक, ईस्टर्न साइड में अटलांटिक. अब अगर देखो से अगर लैंड के ऊपर मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, ये दिस इज अ पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड पैरेलली इसके वाटर में एक पॉइंट बना रहा हूं, मतलब एक प्लेस है ऐसा. गेटिंग माई पॉइंट. एंड कोई भी सीजन देख लो, समर सीजन को ले लो या विंटर सीजन को ले लो. समर सीजन सेम लैटिट्यूड के ऊपर दो रीजन्स तुमने ले लियो. ओवर सेम लैटिट्यूड, ओवर सेम लैटिट्यूड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल. एक लैटिट्यूड के ऊपर सन की एनर्जी तो एक ही आएगी ना, पोजीशन तो एक ही है ना सन का, बट फिर भी डिफरेंशियल हीटिंग होगा. क्यों? ये लैंड जो है वो जल्दी हीटेड होती है. इट एब्जॉर्ब्स द हीट. तो टेम्परेचर यहां तुम देखोगे, और ये वाटर बॉडी है, डीप ओशन, वाटर पेनेट्रेट डीपली and the heat absorbed by this water bodies. स्पेसिफिक हीट अगर देखेंगे तो दोनों का अलग है, लैंड एंड सी का. ये जल्दी गर्म होगा, ये लेट से गर्म होगा वाटर बॉडीज. यहाँ टेम्परेचर आप देखेंगे, समर टाइम टेम्परेचर अगर लैंड के ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या सेम टेम्परेचर आपको वाटर में मिलेगा? नहीं मिलेगा. यहाँ टेम्परेचर कम होगा कंपैरेटिव. ओशन वाटर इज कंपैरेटिवली कूलर. Why you observe such differences? Because of differential heating by the land and the sea. Okay. So we also observe this distribution of the land and the sea is also responsible for differential heating.
गेटिंग माई पॉइंट। अभी मैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोथर्म भी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप देखेंगे वी ऑब्जर्व द बेंड इन द आइसोथर्म ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग। ओके, क्यों बेंड होगा वो मैं बताऊंगा। तो इसलिए व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर इन माय प्रेजेंटेशन, दैट what I have mentioned, that amount of insolation is determined by the various factors like latitude, despite latitude is one of the most important factor, but length of the day is also important. And as you know that in the northern hemisphere, in the summer, the length of the day is high or the longer in comparison to the winter. अभी जब विंटर सॉलिस्टिस आएगा तो शॉर्टेस्ट डे होगा ना, ठीक है। समर सॉलिस्टिस द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर ऑन द 21st of June एंड इन द दिसंबर। तो अभी आप देखते हो ये लेंथ ऑफ द डे ऑल्सो, जब लंबी दिन होगी तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड होगा उस रीजन के द्वारा वो ज्यादा होगा। दिन भर सनलाइट आ रही है अगर 6 to 7 आवर 8 आवर्स, तो हीटिंग ज्यादा होगी। अर्ली 5 o'clock सनराइज हो रहा है और उसके बाद से इवनिंग 7 o'clock सनसेट हो रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डे टाइम हीटिंग ज़्यादा होगी, रिसिप्ट ज़्यादा होगा इंसोलेशन। इसलिए समर सॉलिस्टिस जून में होता है लॉन्गेस्ट डे, लेकिन जुलाई हॉटेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस कॉन्टिन्यूसली हीट रिसीव करके गर्म होती है। इट विल टेक टाइम बिकॉज देयर इज अ लैग इन द हीटिंग। और विंटर टाइम अभी क्या हो रहा है, ग्रेजुअली लेंथ ऑफ द डे डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, छोटा होता जा रहा है, दिन रात लंबी होती जा रही है। तो जो दिन भर लाइट रिसीव हो रहा है अर्थ सरफेस के द्वारा इस नदर्न हेमिस्फीयर में, नाइट लॉन्गर होने के कारण बैक रेडिएशन भी इजिली हो रहा है और इसीलिए धीरे धीरे फॉग होते जा रहे हैं। और दिल्ली में फॉग बढ़ गया और आपके रीजन्स में भी बढ़ा होगा, स्पेशली इन द नदर्न प्लेन्स एंड इन द प्लेट्यू रीजन, नॉट अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ द इंडिया। इंडिया के कोस्टल रीजन में फॉग्स अभी नहीं होंगे उतने, लेकिन फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे ये लॉन्ग विंटर नाइट होगी और डे टाइम शॉर्टर होगा, तो आपको सबसे ज़्यादा ठंड कब महसूस होगी? इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि सरफेस धीरे धीरे हीट रेडिएट कर रहा है और अभी जितनी हीट रॉक्स के पास है वो सब रेडिएट कर लेगा और सरफेस कूल ही रहेगा। जनवरी में तो आप इवन चादर जिसके ऊपर सो रहे होते हो बेड के ऊपर, वो भी ठंड लगती है। बाहर से आते हो तो उस पर बैठना नहीं पसंद करते, रूम में वॉल कूल रहता है, आपके वॉल जो आपके बिल्डिंग्स के हैं। समर में वॉल हीट रेडिएट करता है आपको, आप एसी ऑन करके रखते हो रूम में, रूम टेम्परेचर कूल करने के लिए, एयर अंदर के वार्म होते हैं। अभी धीरे धीरे एयर रूम के आपके कूल हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप रूम हीटर चलाते हो टू मेंटेन द टेम्परेचर। सो बेसिकली length of the day is also responsible for the differential temperature over the planet Earth. I am talking about, apart from the altitude and the distance from the sea aspect. What I have said, that when you look at the mountains, what the side of the mountain in the northern hemisphere receives the more insolation, the southern face, because what I have said, that angle of inclination, when you look at, this is the planet Earth, this is the equator, this is the tropic of Cancer, this is tropic of Capricorn। northern hemisphere में अगर हम देखेंगे इंक्लाइनेशन, ये अगर ऐसा एलिवेटेड सरफेस है तो सन जो है वो एपरेंट शिफ्टिंग कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है। तो यहां पर अगर कोई है तो सदर्न फेस नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्पेक्ट एंगल। बट अगर नदर्न हेमिस्फीयर, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है कोई एलिवेटेड सरफेस, तो उसका जो नदर्न फेस है, बिकॉज मैप के अंदर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो दिस फेस विल रिसीव्स मोर इंसोलेशन। सो द एस्पेक्ट ऑल्सो
when you look at determine the distribution of temperature and the heating. Yes. Sure. ये देखो, दिख रहा है ये। और एपरेंट शिफ्टिंग जो सन की होती है विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ, वो किस किस लैटिट्यूड के बीच होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। यानी आप प्लैनेट अर्थ से सन का पोजीशन देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर विंटर आ रहा है। विंटर क्यों आ रहा है? क्योंकि सन के शिफ्टिंग कैप्रिकॉर्न की तरफ हो रही है, मकर रेखा की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, देख रहे हो, वहां क्या है? समर। ऑस्ट्रेलिया इज इन सदर्न हेमिस्फेयर। और इंडिया में विंटर, इंडिया इज इन नदर्न हेमिस्फेयर। सन का पोजीशन अगर तुम्हें समझ आता है, सन का पोजीशन चेंज होता है, एपरेंट शिफ्टिंग होती है सन की। किसके पोजीशन से? प्लैनेट अर्थ। हम कहाँ पे हैं? अर्थ के ऊपर है। आप सन को देखोगे तो सन की लाइट अभी डिफ्यूज आ रही है और इसलिए विंटर है, यानी कम लाइट आ रही है। क्यों कम लाइट आ रही है? लेंथ ऑफ द डे छोटा हो गया, क्योंकि सन हमारे नदर्न हेमिस्फीयर से दूर चला गया। दूर यानी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा रहा है, मकर रेखा की तरफ। तो अगर सन यहां है, सन यहां है, यहां से लाइट ऐसे पड़ेगी, तो कौन से फेस पर लाइट पड़ेगी? इसके, अगर यहां ये ऑब्जेक्ट है, इसके इस फेस पे लाइट पड़ेगी। अगर यहां एलिवेटेड फेस है और अगर यहां है सन, यहां है सन, यहां है सन, यहां है सन, तो कौन सा फेस ज्यादा रिसीव करेगा? ये फेस रिसीव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। ओके, सो this is the concept of aspect actually. Now apart from that, winds already I had discussed, and I will discuss further in detail the concept of winds and how it distribute the temperature over the planet Earth. Ocean current का rule मैंने समझा दिया। Precipitations and cloud मैंने बताया था, cloud radiate the latent heat, so what we feel more heating during the cloudy nights or during the cloud। इसलिए मैंने बताया था इक्वेटोरियल रीजन्स में, बट क्लाउड एक काम और करते हैं कि क्लाउड हीट को, जो रेडिएंट एनर्जी है उसको क्या करते हैं? एल्बेडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन। तो इक्वेटोरियल रीजन जहाँ ज़्यादा क्लाउड है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर हाई होता है बिकॉज क्लियर स्काई होता है। बट क्लाउड हैविंग ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट रोल in summer season when the cloud accentuate in the sky, what you feel? More humidity and more heating, more perspiration. Okay, so these are some factors which what are responsible and control the temperature distribution over the planet Earth. Am I clear? क्या मेरी बात समझ आई अभी तक? तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेदर लैटिट्यूड इज अ प्राइमरी फैक्टर, यस ऑफ कोर्स इट इज अ प्राइमरी फैक्टर विच कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टेम्परेचर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल in the distribution of the temperature over the planet Earth. Okay, now let's understand another concept, the concept of isotherm. Okay, the line which joins the places with the same temperature, that line is known as isotherm. Getting my point? तो मैंने क्या कहा कि अगर इस पृथ्वी के ऊपर तुम अलग अलग जगहों पर जा रहे हो और उन जगह की, उस प्लेस की टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, और जब मेजर कर रहे हो टेम्परेचर तो सिमिलर टेम्परेचर आ रहे हैं। एक बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल व्हेन यू लुक एट द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, once you measure,
then you measure the temperature of Chandigarh, and the temperature of Amritsar, and say this, for example, the temperature at every place is 25 degrees Celsius. What you can draw a line. This line is known as isotherm. Say, for example, what this isotherm, 25 degrees Celsius isotherm, it is known as. So if you draw a line, अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हो प्लैनेट अर्थ के ऊपर, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये देखिए, ये है ग्लोब, और इस ग्लोब में ये अलग अलग कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्लेसेस. अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ ऐसे करता हूँ और मैं लिखता हूँ इस लाइन के ऊपर कि 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है जितने स्टेशंस, जितने प्लेसेस उस लाइन के ऊपर हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री. गेटिंग माई पॉइंट? सो आइसोथर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? वो डिफरेंट प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है जहां सिमिलर टेम्परेचर है, उसको हम एक लाइन से मिला देते हैं. उस लाइन को हम आइसोथर्म कहते हैं. तो आइसोथर्म्स अभी मैं आपको दिखाता भी हूं, आपने देखा भी होगा. व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी यू गेट द आइसोथर्म्स. से फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस, अभी आप अगर एटलस वर्क किया है तो दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज यूरोप, यूरेशिया, यहाँ पर वेस्ट एशिया, इंडिया. हियर व्हेन यू लुक एट इंडोनेशियन आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओके, यहाँ देखो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है. ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, दिस इज इक्वेटर विच क्रॉसेस फ्रॉम द सेंटर. यहाँ देखो ये 20 20 20, ये ब्लैक लाइंस ऐसे दिख रही होगी आपको अगर, ठीक है. उसके ऊपर लिखा है 20, इसके ऊपर 10, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर -10. फ्रॉम इक्वेटर व्हेन यू मूव्स टुवर्ड्स द पोल द टेम्परेचर डिक्रीजेज. अभी मैंने डिस्कस किया था. ये लाइंस ड्रॉ करने का मतलब है कि अगर तुम यहाँ यूरेशियन रीजन में आर्कटिक से लेकर, और अगर नॉर्थ अमेरिकन रीजन में भी आर्कटिक तक, ग्रीनलैंड में भी आर्कटिक तक फ्लो करोगे, तो ये सारे जो प्लेसेस आएंगे यहाँ टेम्परेचर -10 डिग्री है. उसके नीचे यहाँ देखो ये जो प्लेसेस हैं, यहाँ देखो ये रशियन रीजन, ये कामचातका पेनिनसुला, यहाँ अलास्का रीजन, ये कनाडा का रीजन, यहाँ 0 डिग्री है, क्लोज टू द आर्कटिक. यहाँ देखो 10 डिग्री है टेम्परेचर इन द मिड ऑफ नॉर्थ अमेरिका नियर द ग्रेट लेक्स. ये देखो ग्रेट लेक्स बने हुए हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ठीक है ना. यहाँ आप देखिएगा इधर, ये देखिए कोरिया पेनिनसुला है यहाँ पर, आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है ना. दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, दिस इज जापान, जापानीज आइलैंड. 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है. ओके, हियर देयर इज अ कैस्पियन सी, देयर इज अ ब्लैक सी, द रीजन ऑफ यूक्रेन वेयर द वॉर इज गोइंग ऑन. यहाँ क्या टेम्परेचर दिख रहा है, 10 डिग्री. ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेदर इट इज द रीजन ऑफ ब्लैक सी और द कैस्पियन सी और द कोरियन रीजन्स और इवन द लैब्राडोर रीजन्स, or when you look at the Great Lakes region, the temperature of all these places is near to the 10 degrees Celsius. So this line is known as 10 degree isotherm, 20 degree isotherm, 0 degree isotherm, -10 degree isotherm. So what is isotherm? The line which joins the places with similar temperature. Am I clear? कॉन्सेप्ट समझ आया? व्हाट इज आइसोथर्म? तो ये आइसोथर्म्स जो है, जो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है टेम्परेचर का, ठीक है.
इस कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, इसलिए मैंने बताया कि देयर इज नीड. सो व्हाट आई हैव रिटन हियर ऑन द मैप, isotherm are commonly used to show the horizontal distribution of temperature. अभी तो हॉरिजॉन्टल ही मैंने दिखाया आपको, लैंड और सी के ऊपर टेम्परेचर सारे प्लेसेस की एक ही है, सी में भी आइलैंड्स होते हैं, वहां पर भी टेम्परेचर मेजर किया तुमने, ठीक है. एंड isotherm are the lines connecting point with equal temperature value generally reduced to their sea level equivalent. What do you mean by sea level equivalent? Because altitude पर जाते हो तो लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था. तो बेसिकली जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 1 किलोमीटर के ऊपर जाते हो तुम, अगर यहाँ नहीं भी पता आपको तो 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस है तो आप ये 20 डिग्री सेल्सियस मेजर करते हैं विद द रेफरेंस टू सी लेवल, उसमें से लैप्स रेट माइनस कर कर बताते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको यहाँ का टेम्परेचर पता लगता है. जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल लैप्स रेट है. कुछ कंडीशन में ये अलग भी होता है, मैं बाद में वो कंडीशन समझाऊंगा जब व्हेन आई विल डिस्कस ह्यूमिडिटी, ठीक है. बट इन जनरल इतने डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है. सो नाउ this is the concept, and that's why I had given the concept of lapse rate, despite this concept is important when we will discuss the vertical distribution of temperature. But यहाँ lapse rate मैंने बता दिया कि a rate at which the temperature of atmosphere, because ये phenomena हम troposphere में देखते हैं till tropopause, कि as you move gradually upward with altitude the temperature decreases. Okay. So decrease as altitude increase, and what is the formula? Minus dt upon dA, temperature variation with the change in the altitude. Okay, तो आप क्या देखते हो? टेम्परेचर वेरिएशन विद द चेंज ऑफ विद द एल्टीट्यूड, ठीक है, आप ऐसा देखते हैं. तो आपने क्या देखा? से फॉर हियर द 0 डिग्री or 10 degree or 20 degree or 30 degree, say for example this is the temperature. So change of temperature, ठीक है, and here the altitude 1 kilometer or 2 kilometer or 3 kilometer or 4 kilometer. Okay, say for example at the surface, ये surface है, so at the surface the temperature is say for example 25 degree Celsius or centigrade, and when you move towards the height, okay, so temperature here is say for example the 7 degree Celsius once you measure. So what is this? 25 minus 7, okay, what is this? dt, differential temperature, यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस विथ एल्टीट्यूड 0 और 3, तो 3 किलोमीटर हाइट के ऊपर टेम्परेचर कितना हो गया? 25 माइनस 7. दिस इज द लैप्स रेट. अगर इफ यू मेजर, इफ यू सिट इन द बलून एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, देन यू फाइंड. तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्लाइन करेगा. कैसे मेजर किया होगा? ऑब्वियसली इसको लेकर मेजरमेंट किया होगा ऊपर जाकर अपलिफ्टेड एयर को. तो ऐसे मेजर करते हैं. सरफेस पर टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री, ठीक है. ऊपर जा रहे हो 3 किलोमीटर पर टेम्परेचर कितना है? 7 डिग्री. तो dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर वेरिएशंस को. Surface temperature minus the temperature at certain altitude.
सरफेस पर टेम्परेचर 25 था, एल्टीट्यूड 3 किलोमीटर पर क्या हो रहा है, तो ये डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एल्टीट्यूड। अभी जब तुमको लैप्स रेट निकालना है एट द हाइट ऑफ 3 किलोमीटर, तो कितना निकलेगा, 25 माइनस 7, ओके, एट द 3 किलोमीटर। नहीं नहीं, वो तो होगा, बट अगर फिगर आपके पास है तो ऐसे निकालेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? एंड इन जनरल व्हाट इज द नॉर्मल लैप्स रेट? नॉर्मल लैप्स रेट एनएलआर कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके, तो यहां मैंने लिखा भी है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। सो ये वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर कभी पूछ लिया गया तो ये लैप्स रेट का फॉर्मूला है, ठीक है।